Ours is a big family, global family. All the family members are. यहाँ पर सभी लोग यात्राओं के सब भक्त जुड़े हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। जैसे राधा बाबू ने बताया महाराष्ट्र की, मैंने सबको निमंत्रण भेज दिया था, इसलिए सभी यात्राओं के भक्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी यशोदा नंद रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा कुंज Okay, that is Jai Radha Madhav over. And we will now Om Ajnanatimirandhasya Shalakaya Chakshurunmilitam Hena Tasmai Sri Gurave Namaha. You also could say Dinabandho गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे कृपा सिंधुभ्यो भावनेभ्यो नमः नष्टाप्राये नैष्ठिकी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे चैतन्य कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते So with these prayers we prepare ourselves to recite Bhagavatam today. तो हम इस प्रार्थना के साथ हम श्रीमद् भागवतम का भी हम अध्ययन चालू करेंगे. So do not think that Bhagavatam class is beginning just now. No, it began few minutes ago. All those prayers, including Jai Radha Madhav and all the Mangala Charan and especially Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That is all part of Srimad Bhagavat recitation, beginning to finish all the way. तो जितना भी ऐसा भागवतम देखा जाए तो पहले से आरंभ हो गया जब हमने राधा माधव गया. तो अभी हमने जो भागवतम स्टार्ट से लेके अंत तक जो भी हम बोलेंगे वो श्रीमद् भागवतम ही रहेगा वो. Yeah. So today's verse is from Srimad Bhagavatam, 2nd Canto, Chapter 4, text number 5. स्कंद 2 अध्याय 4 और श्लोक नंबर है 5. मेरे पीछे कहिए, say everybody say after me. Rajovacha. I don't know whether it's on your board or open your laptop. Rajovacha. Samichinam vacho brahman. Samichinam vacho brahman. Sarvajnasya tava nabha. सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम
हरे कथयत कथाम. Okay, we'll do the word meaning. I think you don't have to repeat. पीछे कहने की जरूरत नहीं अभी. So we'll go a little faster. थोड़ा जल्द हो जाए. Raja Uvacha, the king said, Samichinam, perfectly right, Vachaha, speeches. Brahman, O learned Brahmana, Sarvagyasya, one who knows all, Tava, ever, Anagha, without any contamination, Tamaha, the darkness of ignorance, Vishiryate, gradually disappearing, Mayham, unto me, Harehe, of the Lord, Kathayataha, as you are speaking, Katham, topics, translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. Maharaj Pariksit said, O learned Brahmana, you know everything because you are without material contamination. Therefore, whatever you have spoken to me appears perfectly right. Your speeches are gradually destroying the darkness of my ignorance, for you are narrating the topics of the Lord. So I just no translation or how? हिंदी में अनुवाद. महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं. अतः आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है वह मुझे पूर्णतया उचित प्रतीत होता है. आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं. Purport. पढ़ो. यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जब भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है तो वे इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है. In other words, reception of the message of Srimad Bhagavatam from professional men heard by a karmakandi audience never acts miraculously as stated here. दूसरे शब्दों में, जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोता द्वारा सुनी जाती हैं, तो वे ऊपर कहे गए चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती. Devotional hearing of the messages of the Lord is not like hearing ordinary topics. Therefore, the action will be felt by the sincere hearer by experience of the gradual disappearance of ignorance. भगवान की कथाओं का भक्तिमय श्रवण सामान्य भक्तों के सुनने जैसा नहीं है. अतः निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान का क्रमशः तिरोधान हो. यस्य देवे परा भक्तिर यस्य यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हि अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः. When a hungry man is given food to eat, he feels satiation of hunger and the pleasure of dining simultaneously. जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी श्रद्धा शांत होती है और साथ ही भोजन करने का आनंद भी प्राप्त होता है. Thus he does not have to ask whether he has actually been fed or not. इस तरह उससे यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं. The crucial test of hearing Srimad Bhagavatam is that one should get positive enlightenment by such an act. श्रीमद् भागवत के सुनने की अग्नि परीक्षा
यह है कि मनुष्य को निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। Okay. Rajovacha samichinam macho brahman sarvagya shatavanaka tamo vishiryate mahyam harehe kathayata katham. So katha, this is the first day of katha of Srila Shukdev Goswami. ये सुखदेव गोस्वामी जो प्रथम जो दिन है कथा का उनके द्वारा बोली गई। Yeah, so only at the beginning of the second canto of Srimad Bhagavatam, Srila Shukadeva Goswami begins his recitation of Bhagavatam. तो यहाँ पे दूसरे स्कंद से के यहाँ पे आरंभ से अभी उनका जो श्रीमद् भागवतम का जो उन्होंने आरंभ किया पाठ। So this is only the fourth chapter out of over 335 chapters. Only three chapters have been spoken by Shukdev Goswami. तो जितने भी जो 335 जो अध्याय में से सिर्फ 3 ही अध्याय उन्होंने बोले हैं, अभी ये चौथा अध्याय है। And then Raja, king, is already satisfied with whatever has been said thus far. तो यहाँ पे जो महाराज परीक्षित हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं जो भी सुखदेव गोस्वामी द्वारा उनको बताया गया उससे। I need a verse. So he has said, Samichinam. I'm very happy with all that you have said. यहाँ परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ आपने जो कुछ भी कहा है। Samichinam is a nice Sanskrit word. Samichinam. Very good. Well done. Nice. तो यहाँ पे समीचीन जो शब्द है इसका मतलब बहुत अच्छा है। आपकी वाणी आपने बोली है वो सर्वथा उचित है, पूर्ण रूप से उचित है। And he is addressing Shukdev Goswami as Brahman, O Brahman. O Brahman. और उन्होंने महाराज पश्चिम सुखदेव गोस्वामी को बताया और ब्राह्मण का उनको पदवी दिया है, संबोधित किया है Brahman. संबोधित। Yeah, so and he said, what kind of Brahman you are? Sarvagyasya. You are knower of everything. You know everything. उन्होंने बोला आप किस तरह के ब्राह्मण हैं कि आप सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं आप। Yasmin vigyate sarvameva vigyatam bhavati. It is said that anyone who knows the Lord, he knows everything. Yasmin vigyate sarvam eva vigyatam bhavati. So Shukdev Goswami knows the Lord, so he knows everything, so he is addressed here as Sarvagya. तो क्योंकि वो भगवान के बारे में सब कुछ जानते थे, उनका पूरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उनको सर्वज्ञ उनको बोला गया कि आप सब कुछ जानते हैं। And he also, Raja Uvacha, Raja King Parikshit also, you are anagha, you are sinless, pure personality. और आप निष्पाप हैं। So I'm hearing vachaha, your kathayataha, the Bhagavatam story or recitation. And what kind of you are? You are sinless, you are pure. मैं आपसे जो भागवतम का ये वाणी जो सुन रहा हूँ, भागवतम के वचन आपकी वाणी द्वारा सुन रहा हूँ, और क्योंकि आप है ना एकदम निष्पाप है। हरे कथयता कथाम. So your topic is Katha of Hari. आपका जो विषय है वो हरि की कथा है। And Kathayata, and as you kept speaking Hari Katha, what has happened to me as a result?
और जैसे जब आप कथा कह रहे हैं हरि के बारे में, तो उसके कारण जो उसका क्या परिणाम हुआ? Tamo vishiryate mahyam. I am becoming free from tama. My ignorance is disappearing as you are sharing katha with me, mahyam. तो जैसे जैसे आप कथा मुझे सुनाने जा रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरा जो तम है, जो अज्ञान का अंधकार है, वो दूर हो रहा है. Yeah, then Srila Prabhupada is also talking in the purport. Several points he is making. Especially he has quoted this verse, Yasya Devi Para Bhaktir Yatha Devi Tatha Guru Tashay Te Kathita Hi Arthaha Prakashante Mahatmanaha. So here Shukdev Goswami is his guru, spiritual master, and King Parikshit is sitting at his lotus feet as a humble disciple. Yeah. यहाँ पे जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी बताया है, जो श्वेता स्वरूप उपनिषद यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तो यहाँ पे उन्होंने जैसे बताया कि जो परीक्षित महाराज हैं, उनके चरणों में बैठ के सुखदेव गोस्वामी के उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं. The prakashante mahatmanaha. So all the truth is revealed unto a person who listens to Bhagavad Katha, other kathas, Bhagavad Katha or Ramayan Katha or Krishna Katha, Gaur Katha, as they listen from the spiritual master. Then prakashante, that hearer becomes enlightened. तो यहाँ पे जब ये कथा, जब कोई भी हो, भागवत हो, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे गौर कथा हो, कोई भी कथा जब हम सुनते हैं, वो भी अपने आध्यात्मिक गुरु के मुख से, उनके मुख कमल से, तो हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार दूर कर हमें ज्ञान का प्रकाश होता है. Yeah, also to take note that Yasya Devi Para Bhakti, the way we worship the Supreme Lord, Deve Tatha, like Dev, Adi Dev or Krishna Dev, as we worship Tatha Guru, the spiritual master is also worshipped like that. And यहाँ पे बता रहे कि जैसे कि गुरु का हम जैसे भगवान का जैसे देव, जो भगवान कृष्ण, उनका जैसे हम पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह अपने गुरु का भी हमें पूजा करना चाहिए. Sakshad Haritvena Samasta Shastrai, like that statement we are reminded of. And so then it is not different whether you hear from the Lord or before the Sukdev Goswami, from his mouth we hear, effect is similar. तो कथा का श्रवण हम जैसे सीधा भगवान से करें, या जो शुद्ध भक्त हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि, उनके मुख से करें, उनका वो सेम ही होता है. From a person that is anagha, as described in this, of you becoming, or your ignorance getting disappeared. Speaker is anagha, not contaminated by the material tinges. इसलिए जो भौतिकतावादी जो वस्तुओं से अगर कोई आदमी का अप्रभावित रहता है, जो और उनको भौतिकतावादी चीजों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के मुख से हमें सुनने पर हमारे हृदय का जो मेरा अज्ञान है, उसका अंधकार तुरंत ही दूर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, निष्पाप करके बोला है उसको. If the doctor treating patient, coronavirusly infected patient,
If the doctor himself is contaminated by that virus, he himself is diseased, what hope is there that the patient will get cured? No way. So this is a practical example that we could relate to. Simple thing. तो जैसे कि एक जो रोगी है वो आया है डॉक्टर के पास में और रोगी को जो कोरोना जो वायरस से उसका प्रभावित हो चुका है रोगी, तो वो डॉक्टर के पास आया, लेकिन जो डॉक्टर भी कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुका है, तो फिर कैसे हम उम्मीद करते हैं कि रोगी उसके द्वारा स्वस्थ कर दिया जाएगा वो डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर खुद भी उससे प्रभावित हो चुका है कोरोना वायरस से। Yeah, so then Srila Prabhupada is in that context saying that the professional reciters of Bhagavatam, professional, this becomes their business. They maintain even their families by making money by reciting Bhagavatam, and a lot of times they are karma khandis, even demigod worshippers, or they are impersonalists, etc. So that is contamination. And if you hear Bhagavatam from such a professional reciter, a Mayavadi reciter, or a demigod worshipper, or this social welfare worker, then this tamo vishiryate mahyam, as that happened to King Parikshit, he has, his ignorance is disappearing, that would not be the outcome in that case. इसलिए जब हम अगर श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण है वो व्यवसायिक व्यक्ति के द्वारा जिनकी जो रोजी रोटी उनके घर का परिवार का पालन पोषण उसके ऊपर निर्भर करता है, ऐसे लोगों के मुख से सुनेंगे, या नहीं तो जो मायावादी लोग हैं या जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, या नहीं तो जो मतलब कर्मी लोग हैं उनके मुख से अगर हम सुनेंगे तो फिर हम इसकी कोई आशा नहीं कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो महाराज परीक्षित के हृदय में जो प्रभाव पड़ा और उनका अगुआ वैसा श्रीमद् भागवतम एवं प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। या तो इसलिए हमें जो जिससे हम सुन रहे हैं श्रवण कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो गुरु परंपरा से आना चाहिए, जो शुद्ध गोस्वामी गुरु परंपरा है उनसे आएगा तो उसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा। So Shukadeva Goswami is a great soul. शुद्ध गोस्वामी एक महान आत्मा है। And he is the first official speaker of Bhagavatam. और ये पहले जो वक्ता है श्रीमद् भागवत अधिकृत वक्ता है श्रीमद् भागवतम को बोलने के लिए। He is a shuka, right? He's a shuka, right? He's a parrot. Shuka means parrot. He is a parrot originally. देखा जाए तो मूल रूप से वो एक तोता है, शुक मतलब तोता। Yeah, so he is a parrot of pet parrot of Srimati Radharani. Actually ये जो तोता है वो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं ये। So the pet parrot is always around Radharani, and he knows Radha Krishna. So he has descended, or he has been sent down here into this world to talk about Radha and Krishna. Ultimately, he has talked about other subject matters, and essence is in the 10th canto, the topics about Radha and Krishna. इसलिए क्योंकि राधा रानी के तोते से तो समझ लीजिए कि आध्यात्मिक जगत से ही इनको भेजा गया यहाँ पे, ये जो राधा और कृष्ण का संदेश यहाँ सबको बताने के लिए, श्रीमद् भागवत का संदेश सबको बताने के लिए। Yeah, we also know that history, how Shukadeva Goswami, as a parrot now, he was
landed and he was sitting right behind Shiva and listening to Bhagavad, reciting from. किससे की जो शंभु है, जो सब वैष्णव में सबसे उच्च कोटि के वैष्णव माने जाते हैं, उनके मुख कमल द्वारा उन्होंने श्रीमद् भागवतम, Sukadeva Goswami hidingly was listening. He was not sitting in the front in the audience. That's a proper thing. This is not proper sadachar, proper etiquette. So then he got up and he was chasing away that shuka parrot. तो क्योंकि वो पीछे बैठ के वो सुन इसका भागवतम का, तो जैसे श्री जी ने को मालूम पड़ा कि पीछे कोई बैठ के भागवतम का श्रवण कर रहा है, तो एकदम वो नाराज हो गया, बोले आप कौन है ये मेरे पीछे जो बैठ के सुन रहा है पीछे भागवतम का, और वो फिर एकदम क्रोधित होकर उनके पीछे भागने लगे. So Sukadeva Goswami he flew away and Shiva was still running after him, chasing after him with his dim damru and his trishul in his hand and जो उनके आश्रम so escape and so finally as he was in Badrikashram, at that time wife of Srila Vyasadeva was yawning. Her mouth was wide open and this Shuka thought this is the opportunity. He entered right into the mouth and into the womb of Satyavati, I think that's the name. Really? बोलते हैं कि जब वो बद्रिक आश्रम में जब गए वहां पे, तो बद्रिक आश्रम में आप पहुंचे तो उन्होंने वहां पे ढूंढ रहे थे कहाँ सुखदेव गोस्वामी कहाँ सी जगह पे छुप, तो कि वो उबासी ले रही थी उनको, तो उनका मुंह खुला हुआ था और मुंह उनको लगा रहे उसका मुंह खुला हुआ, ये बहुत अच्छा अवसर है कि मैं इसके मुंह में अंदर प्रवेश कर जाता हूँ. इसी तरह से वो उनके मुंह में प्रवेश करके उनके गर्भ में चले गए सुखदेव गोस्वामी. And then he stayed on there and on काफी समय पे रहे for 16 years because he was not 16 वर्ष वहां पे रहे. He was not interested in worldly affairs. Yes. और उनको कोई रुचि नहीं थी, जो ये भौतिक जितने भी जो बाहर की जो गतिविधियां कार्यकलाप, उनको कोई रुचि नहीं थी उनको. Yeah, he was not interested in economic development. उनको जो आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए उनको कोई रुचि नहीं थी उसमें. He did not want to go to overseas to find a job. उनको ऐसा कोई रुचि नहीं कि मैं जाऊं और बहुत अच्छा एक नौकरी ढूंढूं मैं. He was not interested doing his shopping in Dubai. उनको इतना कोई रुचि नहीं थी कि दुबई में जाए वहाँ पे सामान खरीदा जाए बहुत सारा. And all these kind of worldly affairs, he was disinterested. इसलिए जो जितने भी जो भौतिक जगत की जो वस्तुओं में उनका कोई भी रुचि नहीं थी उनकी. So he thought, I'm safe, I'm okay here. So he was staying on there. इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैं अभी यहाँ बहुत ही सुरक्षित हूँ, यहाँ गर्भ में, अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं इधर ही मैं सुरक्षित हूँ. Really, think of those kind of thoughts. What is Sukadeva Goswami is thinking. तो हमें वो सब विचारों के ऊपर मनन करना चाहिए, जो कि सुखदेव गोस्वामी जो सोच रहे हैं उनके विचारों पर जरूर मनन करना चाहिए. The vairagya, detachment. तो वैराग्य हमारा है जो अनासक्ति होना संसारिक चीजों से. Yeah, then in fact you are eligible, or then we could be the recipient of the mercy of recitation of Bhagavatam.
जब आपके साथ ऐसा होगा तो तभी हम उस योग्य हो जाएंगे कि श्रीमद् भागवतम का जो जो श्रवण करके हम अपने आप को शुद्ध बन सकते हैं फिर हम. Hari Hari. And then, well, I think this story is getting longer. I wanted to say several other things. There are so many things to talk about. The time and tide waits for none. So, okay, we'll go faster. तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत लंबी कथा है. तो अभी इतनी लंबी कथा करेंगे समय के क्योंकि पाबंदी है, इसलिए हम इतना लंबी कथा के ऊपर नहीं जाएंगे. Yeah, then Vyasadeva had even arranged for Lord to come and address Shukadeva Goswami and assuring him that if you come out, you'll be safe. It's okay, please come out. Because it also was a big inconvenience for mother of Shukadeva Goswami. Imagine carrying 16-year-old boy. He was growing inside. He was not tiny little boy like Gop Kumar's son here sitting, I think. तो ये है ना जो देखा जाए तो जो व्यासदेव जी उनके कोई पत्नी को काफी कष्ट हो रहा है, इसलिए फिर वो भगवान के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनको आप ऐसा वचन दीजिए. और इस तरह से फिर अंततः वो सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने कोई चीज का कुछ देखा नहीं इधर उधर, सीधा वो भागते हुए सीधे जंगल की तरफ चले गए. So Srila Vyasadeva was running after him. Oh, Shukadeva, but he did not care. Shukadeva went on into the forest. तो व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे थे, भाग रहे थे और बोलते जाते सुखदेव रुक जाइए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने उनका पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्. So he was in putra, there was not enough putra, it's called putreti, putra iti means etc. He addressed his son 3 ways. Rasva dirgha pluta. So that is called Rasva dirgha pluta. Putra. और लुप्त ये 3 तरह से उनको एक्चुअली उसको पुकारा, पुत्र 3 प्रकार से उनको पुकारा. Only Tarabaha, the trees only echoed or responded, but not Shukadeva Goswami. लेकिन सिर्फ वृक्षों से ही उनका जो प्रतिध्वनि उनको सुनाई दिया, उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ वृक्षों का प्रतिध्वनि आ रहा था बस. And as he was now running into the forest, on the way there was a lake and so many ladies were taking bath with their clothes on the bank of the lake. With no clothes, they were bathing. And here's a young man, 16-year-old, handsome and stout and strong, and passing by with no clothes on, Digambar. But the ladies had no issue with that. They continued their bathing because Shukadeva Goswami was all pure, like an innocent child, although in the body of 16-year-old young man. तो बोलते हैं कि जब वो जा रहे थे, भागते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे झील के किनारे कुछ जो नारियां हैं, कुछ स्त्रियां हैं, वो बगैर कपड़ों के नहा रही थी और कपड़े उन्होंने झील के किनारे पर रखे हुए थे. लेकिन जब उन्होंने देखा, सब नारियों ने, वहाँ स्त्रियों ने देखा कि कोई है ना जवान युवक आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा, जबकि सुखदेव गोस्वामी तो जवान हो चुके थे, उनका शरीर हष्ट-पुष्ट था और बहुत ताकतवर थे वो, और बहुत उनका जो शरीर पूरा सुडौल था,
अब पूरा अच्छे ढंग से उसका निर्मित हो चुका था, फिर भी लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उनको ऐसा लगा कि कोई एक बच्चा यहाँ से निकल रहा है, ऐसा लगा उनको। This is all I suppose we are saying, all that we just said is because Parikshit Maharaj said, Sarvagyasya tava anagha, you are sinless and you are knower of everything, O Brahman, O Brahmana. Yeah, so this is a little introduction. यहाँ पे ना भौतिक दोषों से रहित है और सब कुछ जानते हैं और आप निष्पाप हैं। Hari Hari. So that speaker Shukadeva Goswami Maharaj ki. Shukadeva Goswami Maharaj ki. So he has spoken, and then Tamo Vishiryate says, my ignorance is disappearing. As I am hearing you, my ignorance is disappearing. Means I am becoming knowledgeable. Or what you are doing is Om Agyana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Please accept my obeisances, Shukadeva Goswami Maharaj. He hasn't said, but this is on his mind. And you are opening your eye opener, you are opening my eyes, and Om Agyana Timirandhasya, you are curing me, Jnana Anjan, the knowledge, torchlight of knowledge, you are opening my eyes, you are the eye opener, or you are what the doctors do sometimes, the camp, eye camp, I think called eye camp, and then they remove the cataract or do different operations called eye camp. Okay, so you are curing me, you are giving me vision to see things as they are. Yeah. So यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जैसे हम बोलते हैं, हम ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ऐसा करके बोलते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा, लेकिन मन ही मन में उन्होंने ऐसा बोला कि आप है ना, क्योंकि निष्पाप हैं और आप भौतिक दूषण से रहित, इसके कारण मेरे जो हृदय में जो भी अज्ञान का अंधकार वो दूर कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर लोग है ना हमारे आंखों का जो ऑपरेशन करते हैं और आई कैंप लगाते हैं, आंखों का जो इलाज का कैंप लगाते हैं, वैसे ये भी इनका भी ऐसे सोच रहे हैं कि मेरी जो आंखों में जो अज्ञान का अंधकार था वो आपने दूर कर दिया है, ज्ञानांजन प्रकाश कर दिया है, ज्ञान का अंजन डाल के, ज्ञान का अंजन डाला आपने, काजल डाल के, जैसे हम ज्ञान का अंजन, अज्ञान का वो अंधकार दूर करके ज्ञान का आपने प्रकाश फैला दिया है। आंखें खोल दी आपने। First Jnananjan, then soon Premanjan, and then you are ready to go. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santaha Hridayeshu Vilokayanti. You become capable, competent to see. There's a Premanjan, the Jnananjan, there is a Premanjan. Eyes are fully opened and Divya Jnana Hridaya Prakashito, and Divya Jnana is revealed right into my heart, and also all this is Tamo Vishiryate, my Ajnana is, ignorance is disappearing. तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो हमारे जब अज्ञान मतलब ज्ञानांजन मतलब हमारा आंखें पहले खुलती हैं, अज्ञान वहां से दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश आता है, इसके बाद फिर प्रेमांजन मतलब जो प्रेम का अंजन उसमें जाता है, भगवान के प्रति प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा करके फिर हम लोगों को आगे फिर हम हमारा जो आनंद हमें जो मिलता है उस करने में भक्ति ज्ञान का आने के बाद हमें जो भक्ति में आनंद रुचि प्राप्त होती है ऐसे करके। Yeah, so whole world especially in this age of Kali is in total ignorance. पूरा विश्व ये देखा जाए तो अज्ञान के अंधकार में पूरा डूबा हुआ है।
especially in the age of Kali. खासकर ये कलयुग में. And then this Bhagavatam has appeared as a brilliant as sun. और श्रीमद् भागवतम का असली जैसे कि सूर्य चमकता हुआ सूर्य का निकलता है, वैसे ये भी चमकते सूर्य जैसा प्रकट हुए हैं श्रीमद् भागवतम. So light of Bhagavatam, what world needs is light of Bhagavatam, enlightenment by Bhagavatam. तो पूरी दुनिया में अभी जो भागवतम का जो प्रकाश की आवश्यकता है सबको पूरे विश्व में. Well, talking of ignorance, ajnyan, or there is no limit. Unlimitedly, the world is unlimitedly in ignorance. तो देखा जाए तो पूरा विश्व है ना असीमित रूप से अज्ञान अंधकार में खोया हुआ है, डूबा हुआ है. Ignorance. As you ignore something, you become ignorant. Did you hear me? When you ignore something, you become ignorant. बोलते हैं कि कभी कभी हम ऐसा हमारा जो कुछ चीज ऐसी होती है जिसके कारण हमें कुछ सुनने के बाद फिर हम लोग है ना अज्ञान में होते हैं, फिर भी हमको अज्ञान का ही छाया रहता है, अज्ञान का अंधकार हमारे आत्मा के चारों तरफ. You know, I was just there. He just ignored me. He just ignored me. He just ignored me. People say this. So Lord is right here, everywhere. The world is just ignoring the Lord and has become ignorant. तो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कोई हमें आदमी जब हम उसके पास में से गुजरते हैं तो वो हमें देख के भी अनदेखा करता है, तो फिर हम बोलते हैं अरे हम आपने देखा फिर भी आपने हमको आना वो कर दिया, ऐसा जैसे कोई आपने देखा नहीं मुझे, और अनजाने व्यक्ति जैसा आपने मेरे साथ पेश में आए, नहीं आपने मेरे को अनजाने से व्यक्ति जैसा आपने समझा ऐसा करके. तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो भगवान सब जगह उपस्थित है लेकिन फिर भी उसको लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं, फिर अज्ञान के कारण उसको उसकी लापरवाही कर रहे हैं, उसको एकदम उसको ऐसा लगता है जैसे भगवान है ही नहीं, भगवान की कोई परवाही नहीं. Yeah, so there is a jnana and there is a jnana. There is a knowledge about the Lord. Vedesha sarve aham eva vedyaha. The Veda, that is knowledge, and that knowledge is meant to know the Lord, and everything else is all ajnana. So-called jnana is ajnana, so-called knowledge, which goes on in primary school and high school, and then the college education and higher education and overseas education and this and that and what not. But this is all ajnana, in ajnana, ignorance category. So people are trained to become ignorant as they go from grade to grade to higher grade, more ignorant, more ignorant, more ignorant. तो बोलते हैं कि जैसे कोई भी जो ज्ञान है, जो असली ज्ञान उसी को बोलते हैं जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान देता है, आत्मा के बारे में ज्ञान देता है. लेकिन बाकी इसके अलावा जितना भी जो संसार में जो ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाता है आदमी, तो जितना ज्यादा वो बढ़ता जाता है पढ़ाई के क्षेत्र में और पढ़ाई में आगे बढ़ता है, बढ़ता ही जाता उसका ज्ञान. Yeah, so the knowledge of the Atma, Paramatma, and this topic, this is Jnana, and knowledge about the matter, dead matter, is Ajnana. That is also Jnana, but is Ajnana. Or Vidya and Paravidya is called. Paravidya, superior Vidya, knowledge, and inferior material knowledge, spiritual knowledge. Very well. यहाँ पे भी जैसे बता रहे कि ज्ञान जो है जैसे कि जो भौतिक ज्ञान है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो हमारा जो आत्मा के बारे में, परमात्मा भगवान के बारे में जो ज्ञान है, वही जो सच्चा ज्ञान है, वही आध्यात्मिक ज्ञान जो सच्चा ज्ञान माना गया है. सब अज्ञान का अंधकार है. तो तेषाम एवानुकं पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तौ
Jnanadipena bhashvata. Krishna, I think it's 10th chapter of Bhagavad Gita, he said, Tesham eva anukampartham. Anukampa. When Lord looks at us and our situation and struggle and this and that and ignorance also, he must be seeing, and then Lord has anukampa in his heart. His heart trembles, is full of karuna and kindness, and then Lord does something for such persons. तो यहाँ पे बता रहा है कि जैसे जब हम लोग अज्ञान के अंधकार में होते हैं उस टाइम में अनुकंपा करते हैं भगवान, क्योंकि बहुत करुणामय है और इसके कारण वो चाहते हैं कि हम अज्ञान से बाहर निकल के हमें करुणा का प्रदर्शित करते हैं और हमें अंदर से ज्ञान देते हैं वो जब हम उनके बारे में सुनते हैं. So aham ajnanajam tamaha, ajnanajam tamaha. Take note of what Lord is saying. Ajnanajam tamaha. Tama means darkness. Darkness is called by ajnanaja. Ignorance is a cause of darkness. And there's a darkness during daylight, bright daylight. We are in darkness, groping in darkness. So, ajnanajam tamaha nashayami. I will destroy, as King Parikshit said, my tama vishiryate, my ignorance is disappearing. So Lord says, I will make your ignorance disappear, make you free from ajnanajam tamaha. इसी यहाँ पे से भगवान फिर यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि अज्ञान में है ज्यादातर लोग, तो अज्ञान का भगवान बोलते जब मेरी कृपा होती है, अनुकंपा मैं करता हूँ, तो उनका पहले जो हृदय में अज्ञान को दूर करके मैं उसमें ज्ञान का प्रकाश लाता हूँ मैं. So how does Lord do this? He says, Jnanadipena bhashvata. I light a lamp of knowledge right in your heart. इसलिए यहाँ पे फिर भगवान कैसे मैं अज्ञान को दूर करता हूँ, तो ज्ञान का प्रकाश का दीपक में जला के आपके हृदय में मैं वो अज्ञान को दूर करता हूँ. So that is a light of Bhagavatam. तो वो कौन सा वो ज्ञान का दीपक कौन है? वो भागवतम का जो प्रकाश है वही ज्ञान का दीपक. So what has happened? This will, is it happening? Prabhupada is talking in the purport. We should be able to experience. If you eat a meal, then no one else has to say, I'm sure you enjoyed the nice meal, isn't it? You know, you have eaten. So we should be able to, as we keep hearing, Bhagavatam Nityam Bhagavata Sevaya, we should be able to experience and say, yes, my ignorance is disappearing. I am becoming knowledgeable, equipped with the knowledge. Then यहाँ पे जैसे बता रही तमो विषय रहते मैया, मतलब हमारा जो ज्ञान अज्ञान है वो दूर हो रहा है और मेरे को अज्ञान का दूर रूपी अंधकार को दूर करने का मुझे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो रहा है. तो जैसे कि एक भूखे व्यक्ति को जब हम खिलाते तो उसकी जो भूख है वो शांत हो जाती है, तो इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ मेरी भूख शांत हुई, हमें पूछने की जरूरत नहीं उसको, वो ऑटोमेटिक उसके हाव भाव से हमें लगता हाँ अभी उसकी भूख खत्म हो गई है, अभी उसने तो बोल दिया हमें अभी दूसरा हो जा रहा खाना नहीं चाहिए, मेरा हो गया बस. Prabhupada is writing, भूख खत्म नहीं, भूख लगनी चाहिए. You should be hungry, Prabhupada says in the party. You should be hungry. Yeah. So I was thinking that as we hear little, that becomes appetizer. Your appetite goes up. You hear something and you like it. Oh, this is nice, nectar. And you would like to hear more. And that was happening with all the sages of Naimisharanya also. They say, Swadu, Swadu, Pade, Pade, please. We are not tired. Please go on reciting Bhagavatam. We want to hear more. We are hungry. We are thirsty. We are greedy. Yeah. यहाँ पे जैसे प्रभुपाद एक्चुअली
लेकिन यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि जैसे हम भागवतम ऐसी चीज है कि भागवतम का श्रवण करने से हमारी तो और भी जो भूख प्यास वो बढ़ जाना चाहिए उनको श्रवण करने की। जैसे कि यहाँ पे ऋषि लोग हैं जो नैमिषारण्य के, वो जब महाराज सुखदेव गोस्वामी से जब वो सुनते हैं तो उनको बोलते हैं साधु साधु, तो उनको बोलते हैं और बोलिए, बहुत अच्छा और बोलिए, हम थके नहीं है, हम तो और भी ज्यादा हमें आनंद आ रहा है, हमारा आनंद बढ़ता जा रहा है, आप और बोलिए। तो वो ऐसे उनको भूख बढ़ते जा रही थी, उनकी प्यास बढ़ते जा रही थी भागवतम श्रवण करने के लिए। So please go on and on. And when I was last time there in Dubai, I heard they have a program called Nityam Bhagavata Sevaya. I was informed, Maharaj, there's a Nityam Bhagavata Sevaya program here. I said, oh, okay, fine, what I had to do? What is that Nityam Bhagavata Sevaya? So I was told how devotees gather every day before going to their offices. Which temple is that? You know that. So, क्या मंदिर का नाम? कृष्ण मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर। Srinath ji. So I also, then I was there one day to do my seva, Nityam Bhagavata Sevaya. So I was thinking those devotees must be, they just had their breakfast and before going to the office, okay, the breakfast is for the belly or the body, what about the soul? Soul is still hungry. You did not feed the soul. So they feed the आदि पोटोबा त्यानंतर विठोबा, मराठी में कहते हैं पोटोबा विठोबा। पहले पेट और फिर विठोबा, फिर भगवान की कथा। तो so they all come in a good number and then they listen to Bhagavatam, so they are still hungry, and then they go to the office. So this is sign of hunger. They are hungry, they want to hear, and this has to be done every day, every single day. We have to feed our souls. मुझे याद है जब मैं दामोदर देश में आया था तो वहाँ में नित्यम भागवत सेवा करके वहाँ पे श्री वल्लभ प्रभु ने हमें बताई, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं हम नित्यम भागवत सेवा, तो मैं बहुत मुझे अच्छा लगा। और वहाँ पे हम मंदिर में भी हम गए थे, वहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है वो भी है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे भक्त हैं वो है ना एक्चुअली ऑफिस जाने के पहले ब्रेकफास्ट करके जा रहे थे वो, लेकिन इसके बाद जब ये तो शरीर के लिए उन्होंने शरीर की भूख मिटाई उन्होंने, लेकिन उनकी जो आत्मा की भूख है वो सोचा था। तब मैंने देखा अवसर दिया आप लोगों ने कि श्रीमद् भागवतम का पठन करने के लिए। So go on hearing Gita, Bhagavad, Chaitanya Charitamrit. Yeah. तो हमेशा ये हमारा ये जो क्रम है, मैं श्रवण करने का क्रम ये जारी रखने का है, भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत सुनते रहने का हमें। Yeah, and I was just reminded that Radhastami is on 26th, right? You remember? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. So that's Ashtami. The next day is Navami. Ashtami ke baad, next day is Navami. And that Navami of this month of Bhadrapad, Shukla Paksha, bright fortnight, Navami is the day Shukdev Goswami recited, he began the recitation of Bhagavatam. तो मुझे याद है अभी, क्योंकि मुझे किसी ने याद भी दिलाया कि अभी क्योंकि राधाष्टमी आ रही है 26 तारीख को, तो अष्टमी है वो, तो नवमी के दिन जो उसका जो दूसरा दिन है राधा रानी के प्रकट के दूसरा दिन, तब से लेकर उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का ये जो बोलना आरंभ किया था, उनका पठन आरंभ किया था। So the verse that we are reading, this is the first canto and second canto and fourth chapter, fifth. So this was spoken on Navami of that year. तो बोले ये उस साल का जो नवमी के दिन से फिर ये इनका जो श्रीमद् भागवतम का वो उन्होंने बोलना आरंभ की थी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी। And of course, for your information, if you are not in a hurry, today is supposed to be a holiday.
Uh, so तो I will say that what I was going to say, I just slipped. Okay, the Shyamdesh Goswami recited Bhagavatam, and that was the first day. Navami. Okay, this much you said. Okay. बोलो. हाँ, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवतम का जो आरंभ किया था जब उन्होंने, तो उस दिन नवमी था, वो पहले दिन था जब उन्होंने भागवतम आरंभ किया. So as Sukdev Goswami was reciting Bhagavatam, that was 30 years after Lord Sri Krishna's departure. Take note of this. तो ये जो है ना, जब श्रीमद् भागवतम उन्होंने आरंभ किया था बोलना सुखदेव गोस्वामी, तो तब 30 साल हो चुके थे भगवान श्री कृष्ण को इस लोक से जाके. He was only 30 years ago Lord departed for his own abode. Krishna Sudhama. 30 साल पहले में चले गए थे. And then meditation began. उसके बाद नवमी के दिन ये जो श्रीमद् भागवतम का जो चालू किया उन्होंने. And Bhagavatam recitation concluded, or Bhagavad Katha Samapan took place on the Bhadra Purnima. और ये श्रीमद् भागवतम जो समापन हुआ था वो भद्र पूर्णिमा के दिन उसका समापन हुआ था. And there is a significance of this Bhadra Purnima. It is mentioned in the 12th canto of Bhagavatam that one should share or donate Bhagavatam to others, and you derive big benefit. You develop love of God, and you go back to home, back to Godhead for doing this service, being charitable and giving Bhagavatam to others. Set up Bhagavatam, sharing Bhagavatam with others. ऐसा बताया गया कि जो 12वें स्कंद में भी ऐसे बताया गया इसके बारे में, अगर हम लोग ये भद्र पूर्णिमा के दिन अगर हम एक सेट पूरा भागवतम किसी को अगर हम दान में देंगे या उसको देंगे, तो वो बहुत बड़ा हमें उसका पुण्य फल. और क्या पुण्य फल कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की आसक्ति हो जाती है और फिर हम भगवान कृष्ण के धाम में जाते हैं इसी जन्म. Yes, and then so ISKCON and ISKCON's BBT for past few years now, they had been having this Bhadra Purnima campaign, meaning distributing hundreds and thousands of sets of Bhagavatam during this time. And that campaign is on this year also. तो इसलिए ये इन्होंने बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं हमारे ISKCON में, हमारे जो बीबीटी ट्रस्ट है, कि ये श्रीमद् भागवत का वितरण पूर्णिमा के दिन. So this year also they had taken a big target of distributing 10,000 sets of Bhagavatam. Of course, the situation has changed, pandemic conditions and things are still. I just received communication from Bhima Prabhu, the trustee of BBT in India, that they are inspiring and encouraging ISKCON authorities and followers of Srila Prabhupada to see how they could distribute Bhagavatams more and more during this upcoming period of Bhadra Purnima, and that period that Bhagavatam was spoken by Sukdev Goswami. तो बोलते हैं कि मैं जो अभी इस साल भी इस वर्ष बहुत जोर शोर से उसका पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है श्रीमद् भागवतम के वितरण के लिए. उनका है जो बीबीटी कि हम बहुत सारी वितरण जितने भी मंदिर के जो अध्यक्ष हैं और श्रील प्रभुपाद के जितने भी जो शिष्य हैं और हमारे ISKCON के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो उन सबको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम भद्र पूर्णिमा आ रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका वितरण किया जाए, जोर शोर से वितरण किया जाए इसका. और हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को हमें पहुंचना, लक्ष्य की प्राप्ति करना है. So begins
remains at home, so you are welcome to distribute Bhagavatam sets to your neighbors, friends, colleagues, but make sure you have set up Bhagavatam at your home, and so make sure you have a Bhagavatam, and also then you could read Bhagavatam daily, and please get into this practice of reading Bhagavatam regularly. इसलिए फिर हमें जो हमारा जो बोलते हैं कि कुछ भी जो दान का प्रक्रिया हमारे घर से आरंभ की जाना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ पे हमारे अड़ोसी पड़ोसी उनको हम सबको श्रीमद् भागवतम के बारे में बताएं, उनको हम पुस्तक वितरण करें उनका ये भागवतम का, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी और किसी जगह में भगवत धाम भी जा सकते हैं हम लोग, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हमें भागवतम वितरण करना है मध्य पूर्णिमा के दिन. And then I wanted to, before I close, wanted to make one more announcement or for your information and action also, and that is regarding the upcoming World Holy Name Festival. मैं और दूसरा ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो अभी जो पूरे विश्व में जो पवित्र नाम के जप का जो है वो होने जा रहा है, वो उसको में भी आप भाग लीजिए. So this festival is going to be held beginning on 17th of September till 23rd of September. Remember 17th through 23rd. Did you make a note? Mental note. जो पवित्र नाम का जो त्योहार जो मनाया जा रहा है वो 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक मनाया जाएगा, तो कृपया करके सब इसको आप लिख लीजिए. ये 17 से 23 तक ये चलेगा त्योहार और सब इसमें इसको मनाना चाहिए. In fact, every year this is 24th annual World Holy Name Festival. 24th. तो ये जो 24वां जो पूरे विश्व में जो विश्व सम्मेलन है प्रचार भगवान के पवित्र नाम का जो सम्मेलन है, ये 24वां सम्मेलन है पूरे विश्व हरिनाम उत्सव. ये हरिनाम विश्व हरिनाम उत्सव है ये. Yeah, why 17? Because 17th September is the day and the date of Srila Prabhupada's arrival in 1965. बोले 17 सितंबर भी क्यों नहीं रखा हमने, क्योंकि 17 सितंबर को ही जो श्रील प्रभुपाद है वहां पे पहुंचे थे अमेरिका, इसलिए हमने ये तारीख चुना 17 सितंबर. So महाभागवत श्रील प्रभुपाद के Srila Prabhupada Bhagavad, Vyakti Bhagavad, person Bhagavad, arrived in America with 200 sets of Bhagavatam also. So it is the arrival day of Srimad Bhagavatam, the book Bhagavad, and person Bhagavad. Srila Prabhupada arrived, and also he was carrying a big gift. वहीं से उनका भगवान का एक्चुअली क्या है, वो भगवान का जो पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र है वो वहां पे पहुंचा और उसको पूरा व्यक्तित्व किया श्री प्रभुपाद. So to glorify and being grateful to Srila Prabhupada and Bhagavatam and especially holy name, we have this festival, upcoming festival, and we would like you all to be part. Globally, all the members of Hare Krishna movement are expected to join this Hare Krishna World Holy Name Festival. इसलिए जो पुस्तक भागवतम है और व्यक्ति भागवतम प्रभुपाद है और ये भगवान का पवित्र नाम का ये हम प्रचार प्रसार करने के लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग 17 सितंबर से जो 23 सितंबर के जो त्योहार है हरि नाम का जो प्रचार प्रसार का, उसमें सब शामिल होना है. जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन के जो भी सदस्य हैं सबका आना चाहिए इसमें. So we expect entire Middle East be integral part of this festival. There's a japathon. One day you could chant and chant and chant and chant japa all day. Meditate, transcendental meditation. And another day there will be a 24 hours kirtan with drums and kartals.
तो इसलिए यहाँ पे जो त्योहार में जो पहले दिन आपको जो जपा आप करेंगे, जपाथान करेंगे, इसके बाद दूसरे दिन से फिर आप कीर्तन में भाग लेंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये इसमें शामिल होना है। We also have organized Japa retreat. All the programs will last for 7 days. So we have Japa retreat, and our senior Prabhupada disciples will make presentation each day how to improve your japa. It's very interesting and beneficial. श्रील प्रभुपाद के जो वरिष्ठ शिष्य हैं वो जपा रिट्रीट करेंगे। जपा रिट्रीट का मतलब ये है कि जपा वर्कशॉप, जिसमें आपका जपा कैसे, आपकी जो गुणवत्ता है जपा की, उसकी क्वालिटी है, उसको में कैसे सुधार दिया है, एक अच्छा जपा कैसे किया जाए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। And then there will be 7 days of Bhagavad recitation. We have selected those verses from Bhagavatam which glorify the holy name. Yagye Sankirtana Prayarvijanti Hi Samedasa, like that. 7 verses, and each day one of our very, very senior leaders, they will be reciting Bhagavatam 1 day each, so 7 days. इसलिए अभी हमने जो हरे कृष्ण महामंत्र का है, जो उनकी जो महत्व कितना कितना महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर जो श्रीमद् भागवतम में से हमने लिया है, जो श्लोक लिए हैं जिसमें कि हरे कृष्ण महामंत्र का महिमा का वर्णन गुणगान किया गया है, उसकी महत्ता का के बारे में बताया गया है। So we are, तो हम बताएंगे डेली एक श्लोक बताएंगे। We are releasing all our programs and events and spreading them around. I'm sure they already have landed in Middle East also, in Shyamdesh. Has anyone received or read some of our introductory? Yes, Maharaj. Yes, we got one, yes, Maharaj. You did, good. So it's your duty now to propagate, inform others. Yeah, sure. And like that, we want a big networking going in Middle East and participate in this yagya, Sankirtan yagya for Vishwa Shanti, Vishwa what, especially the pandemic situation is there, and the theme of this year's World Holy Name Festival is let us make the world fortunate. Let us make the world fortunate by participating and performing lots of kirtan, sankirtan, japa, chant the holy name and be happy. Yeah. तो इस तरह से हम पूरे विश्व को हमें शांति में बनाना, खासकर जो ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है उसमें सब लोग खुश रहे, शांतिपूर्वक सब लोग रहें और उनका कष्ट दूर हो। उसके लिए हम इसको चाहते हैं कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हरि नाम का, हरे कृष्ण जो अभी हम जपा था ना, उसमें जपा रिट्रीट है और भागवतम के जो श्लोक के बारे में भी उनका पढ़ा जाएगा। तो ये सब हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग इसमें भाग लें, सभी लोग आए, श्यामदेश के सब भक्त लोग उसमें आए। Okay, so Tukaram Kirtan, Vittal Kirtan, that will be savory for us. I'm the only one here, there's no one. Usually in Kirtans you need a team, right? Okay. Sundarate dhyana ubhe vite vari karakata vari theuniya tulsi haragala kase pitambara avade nirantara hechi dhyana makara kundale talpati shravani kanthi kaustubhamani virajita जय जय विठ्ठल रखुमाई, 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 जय जय विठ्ठल रखुमाई। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Go. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna साथ में कहो, sing it together. हरे राम Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. कृष्ण हरे हरे राम हरे Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Radha Pandharinath Radhe, Jaya Radha Pandharinath Radha Pandharinath Radhe. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol to you. हरि Bol, Hari Bol. हरि Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Srila Prabhupada. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Okay. हरि बोल जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Okay, so we are. Maharaj, some question actually. How can we take questions, Maharaj? Oh, question. It's already late now. Maharaj, there are some questions. Can we take it, or is it the time is? Okay, quick. Let's see. Okay. There's one question from K. Rani Mata. She is asking, why do some people take up Krishna consciousness despite chanting and reading Prabhupada books, and why don't they take up sadhu sangha? What do? They sing, but they don't. People don't take up Krishna consciousness despite chanting and reading Srila Prabhupada books, and they don't take up sadhu sangha also after reading also. Why? Well, they will take. Have some patience. Don't be disappointed. Yeah, there's always in Krishna consciousness. There is always up and down, or yeah. So Right. like that. Yeah, this is every soul, every aspiring soul goes through this bhog and tyag, and yeah. So, and everyone is a different. It all depends on their past also. Said every sinner has a future. Every sinner has a future, and every saint had a past. Did you get that? Every saint had a past, and every sinner has a future. So Right. have patience. Yeah. तो यहाँ पे पता है माता ने प्रश्न पूछा था कि कुछ लोग है ना चैंटिंग भी करते हैं और प्रभुपाद की किताब है, लेकिन उसके बाद भी वो साधु संघ वगैरह फिर बंद कर देते हो, और उसके बाद फिर भक्ति में आगे उनका जाने के लिए मुश्किल होता है उनको। तो ऐसा क्यों होता है? तो महाराज ने बोला कि कृष्ण भावनामृत में तो ऐसा होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो हमें उसका उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यह समय धैर्य रखना चाहिए और धैर्य के साथ उनको आगे बढ़ाना चाहिए।
और उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, तो एक न एक दिन जरूर वो भक्ति में आगे आ जाएंगे। वो जैसे कि एक जो बहुत पापी आदमी है उसका भी भविष्य होता है, और एक जो साधु होता है उसका जरूर इतिहास होता है। Okay, next. Next question is by Paramadatta Gaur Prabhu, and he is asking, he gives pranams to you and to Lotus feet. And question, one second, Maharaj. When a devotee's Diksha and Siksha Guru passes away from this material world, taking Guru's Vani and continuous devotional service, how the devotee lives after losses of an intimate friend with whom once had KC practice and progressing together? That is a little confusing question. Okay. यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रभु पूछ रहे हैं कि जगह जैसे कि किसी का दीक्षा और शिक्षा गुरु जाने के बाद तो ठीक है, हम जो गुरु का जो वाणी है वाणी सेवा करते हैं, और इस तरह से हमारी भक्ति हम आगे बढ़ते जाते हैं भक्ति में, मतलब एक अवसर है हमारे पास कि हम भक्ति में जाए। लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने जो भक्ति आरंभ किया, मतलब खासकर जो मुझे लग रहा है जो पति पत्नी है, मतलब पति जो है ऑलरेडी भक्त है लेकिन पत्नी भक्त नहीं थी, तो वो उसके साथ आई और चालू किया उन्होंने भक्ति करना। लेकिन अगर पति चला गया तो पत्नी का क्या होगा फिर? पत्नी कैसे भक्ति? I don't know. Okay, I don't. Let me say something. I don't know what different things. There are so many different elements of this question. But once Prabhupada was asked by reporters that after your death, what will happen to the movement? How will it go on? And then Prabhupada said, I will never die. So what does that mean? As Prabhupada explained, I will stay behind in the form of my books, form of my Vani. And so Vapu goes, Vani stays. And Bhaktivinoda Thakur also said that it is ill one who thinks that such and such guru or acharya is dead. No, he is here in the form of Vani, and he continues to preach. So like that. एक बार शिला प्रभुपाद से भी रिपोर्टरों ने यही प्रश्न पूछा था कि शिला प्रभुपाद आप जब स्वामी जी चले जाएंगे इस जगत से तो फिर क्या होगा, आप जो आपके जो शिष्य वगैरह वो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि मेरे जाने के बाद जो मेरी वाणी है वो वाणी को अगर ये पूरा उनका अनुसरण करेंगे तो मेरे को उसमें पाएंगे, वाणी में पाएंगे, और इस तरह से वो भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए जो शिला प्रभुपाद बता के गए कि आचार्य जो है वो कभी मरते नहीं है, वाणी के रूप में हमेशा जीवित रहते हैं। So you have been writing, I'm sure, to your spiritual master or your instructing spiritual master, your eternal servant. Huh? So we are eternal servant, not that we are servants or disciples only so far they are with us in the Vapu and then we cease to be the servant. That is not the case. We are eternally, while the Guru is living, Guru's body is no more, we continue to be their servants, and they will continue to reciprocate with you. So have faith. सेवक हमेशा से है, तो इसलिए हम कभी भी जो उसका ऐसा नहीं कि इसी जन्म में सिर्फ उसके सेवक है, हमेशा से सेवक हैं और हमेशा से रहेंगे हम उनके सेवक, ऐसा उसका मतलब। Yeah, while Srila Prabhupada was amongst us, one time Prabhupada was traveling in the West and we had a traveling program in India. I was managing one program. I invited Prabhupada to, whenever he would be back in India, he could travel with us. So Prabhupada responded saying yes. He expressed his willingness to travel with our traveling party. But he also said, so far you are following 4 regulative principles and chanting Hare Krishna. You should be assured that I am with you. So whether I travel or not travel, if you're following instructions,
sticking to the vows, I am with you. This was how Prabhupada responded. तो बोलते हैं एक बार जब हम ये जो बस की पार्टी में जिसमें जा रहे थे सब लोग, तो हमें श्रील प्रभुपाद को बोला नहीं आप भी चलिए तो अच्छा होगा हमारे साथ। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि अगर मैं हमेशा तो सब जगह नहीं जा सकता सबके साथ में, लेकिन जब कोई भी जो जितने भी जो प्रचार करने वाले हैं या जो भी ये ट्रेवलिंग पार्टी है, जो वो लोग जब तक 4 नियम पालन करेंगे और 16 माला जाप करते रहेंगे तब तक वो मेरी उपस्थिति को हमेशा आपके साथ में पाएंगे। वो उनको लगेगा मैं उनके साथ हूँ, हमेशा अनुभव करेंगे मेरी उपस्थिति में लोग। Okay, anything else? Any other? Chaitanya Chandra, Prabhu, can you go? You can ask the question. Go ahead. Chaitanya Prabhu. हरे कृष्ण महाराज। Hare Krishna. महाराज जो शिवजी महाराज जो कथा सुन रहे थे तो कौन बता रहे थे वो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या शिव जी कथा कर रहे थे? हाँ, नहीं सुन रहे थे सो सुखदेव गोस्वामी के साथ। वो तोता सुन रहा था। राधा रानी बता रहे थे, कौन बता रहे थे? बताने वाले शिव जी थे और सुनने वाले सुखदेव गोस्वामी थे। वो सुखदेव गोस्वामी नहीं बने थे, लेकिन वो जब तोते थे, तोते के रूप में वे सुन रहे थे उस कथा को। स्पष्ट है? थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। Sadhu Sangha Prabhu, one last question. Please go ahead. Sadhu Sangha Prabhu, go ahead. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the beautiful class. I had a question like, how do we become fixed up in mind and consciousness like Parikshit Maharaj? Even though we regularly we are listening to, we regularly listen from realized souls. What was that? How do we become fixed up in mind and consciousness like Maharaj Parikshit? So, Rome wasn't built in a day or night, they say, so this is also going to take time, right? So that's our goal, to be fixed up, or even become dhyanastha, or yogastha, kuru karmani. So this is going to, so we could also say that you begin with the faith and then sadhu sang. So this is how to do this. So this is the reply. You have to have faith to begin with. With faith you have to approach and associate with sadhus. As you approach sadhus, they are going to be giving you some instructions, do bhajan, do this, don't do this. And as you do bhajana kriya, you are going to be becoming free from anarthas. And the more you become from anarthas, then Nityam Bhagavata Seva Bhagavati Uttam Sloke Bhaktir Bhavati Naisthiki. Naisthiki means nishtha, means fixed up in devotional service or devotional thoughts, devotional activities. And Prabhupada says, then it is reversing, no more ayara. Next stage, and that attachment will give rise to bhav, which is initial stage of prem, and finally prem, which is a goal of life, and then you are really finally and eternally fixed up. So this is one way of explaining how to become fixed up. So there are steps, and every day you have to work on this. Utsaha, nishaya, dhairya also has to be there. With all enthusiasm, nischay, determination, and dhairya, patience also.
And all this is done again in association of devotees, sadhu sang, sarva shastre kai lo matra sadhu sange sarva siddhi hoy. And part of sadhana is chanting of the holy name, recitation of Bhagavatam, and like that. This whole process of Krishna consciousness is aimed at becoming fixed up. Yeah? Is that? Yeah, thank you, Maharaj. Okay. There is one last question, Maharaj, if you have time. Otherwise, we will stop. Okay, go ahead. Okay. Anantarupa Gauranga, quickly go ahead. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जस्ट छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अविद्या और अज्ञान में क्या फर्क है? अविद्या, या दे आर सेम और दे आर डिफरेंट? avidya you said, or avidya, right? Avidya. Yes, yes. Yeah, I think same. There may be some subtle difference I'm not aware of, but generally, normally, they are synonymous. Avidya is ajnyan. Jnana vidya. Vidya vinayena shobhate. So vidya vinayena shobhate. As one cultivates vidya, then one becomes, is glorified, or yeah. Take it as the same. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Maharaj, खूब आभारी, Dhanavad Pranam at your lotus feet again from all of us in Shyamdesh and UAE devotees here, and we pray again for your good health, and we look forward for more mercy from you sometime when you are free. I know you are very busy and scheduled, but thank you for coming today and giving us such wonderful enlightenment. So please accept our humble obeisances at your lotus feet again from all of us here. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna.